Kashmir Now. I'm your host, Uzma Jafri. Let's see what we have lined up for you this week. People in POK struggle to celebrate Ramadan amid skyrocketing prices. Activists criticize Pakistan for human rights violations in Gilgit-Baltistan and POK at 52nd session of United Nations Human Rights Council. 84th Senior National Table Tennis Championship organized in Jammu City. Handicraft Training Center empowers women in far-flung areas of Rajouri. And in our special section of Incredible India, we'll take you to the temple city of Bhubaneswar, where the magnificent Rakuna Rath Yatra was attended by thousands of devotees. Pakistan-occupied Kashmir has been grappling with inflation for a long time. The costs of almost all items have touched a new high. People are struggling to fulfill their basic needs. The people complain that they are unable to celebrate their most significant festival, Ramadan, owing to high inflation. Have a look. The month of Ramadan means celebration and festivities to Muslims across the world. However, for the people in Pakistan-occupied Kashmir, it turned out to be an unpleasant affair as they continue to face the heat of rising inflation and are unable to afford basic commodities. The people in the illegally occupied territory continue to bear the brunt of hyperinflation. Even the basic commodities such as food grains are out of reach for the common man. आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। फ्रूट जो है वो ख़रीदने की पोजीशन में नहीं है, आम अनाज भी ख़रीदने की पोजीशन में गरीब आदमी नहीं है। पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, हर चीज़ महंगी है। तो मैं अपने जो ताजरान हैं, बिलखसूस जो होलसेलर डीलर्स हैं, उनसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि जो आप होलसेल पे जो है दुकानदारान को एशियाई खुर्द व नोश फरोख्त करते हैं, आप मेहरबानी करके रिटेल में भी, परचून में भी अपने जो है आवाम को उसी रेट पे दें। The acute economic crisis in Pakistan is affecting the illegally occupied territories of POK and Gilgit-Baltistan also. As provinces across Pakistan face food shortage, its impact is even severe on these two regions. A vast majority of people here are unable to afford their basic requirements like food and fuel. Residents accuse the stooge administration in the illegally occupied region for the current state of affairs. People across the region are finding it hard to even celebrate their most significant religious festival of the season. पूरी दुनिया में जब गैर मुस्लिम भी होते हैं तो वो पैकेज देते हैं रमज़ान मुबारक में, तो हम मुसलमान जो है वो महंगाई करते हैं, तो ये बड़ी जुल्म और ज़्यादती की बात है। However, local administration in the illegally occupied region often expresses fictitious solidarity and sympathy for the Muslim residents, but they failed to notice the simmering angst against them that could anytime snowball into a full-fledged revolt. Pakistan's sinister plans and unlawful governance in the illegally occupied territories of POK and Gilgit-Baltistan are raising eyebrows of the international community. Pakistan yet again faced a backlash at the 52nd session of the United Nations Human Rights Council, or UNHRC, where its grave human rights violations in the illegally occupied territories were exposed by Kashmiri activists. We have a report. A part of Kashmir is under illegitimate Pakistani control for over 7.5 decades. People here accuse Islamabad
of marginalizing them and depriving them access to fundamental rights and services. Recently, a number of Kashmiri activists gathered at the 52nd session of the UN Human Rights Council in Geneva to highlight the plights they have endured for years. Underscoring Islamabad's atrocities on Kashmiri people, Nasir Aziz, the spokesperson of the United Kashmir People's National Party, said, Pakistan's no-vocal treatment of Kashmiris posed a serious threat to human rights in the region. The aim of the event was to draw international attention towards the prevailing grim situation in the region. Participants highlighted that the natives of Pakistan-occupied Kashmir and Gilgit-Baltistan were not being treated at par with the rest of Pakistan, and why they needed an urgent global attention. Human rights violations have been reported in Pakistan for several decades, with range of issues including extrajudicial killings, enforced disappearances, torture, discrimination against minorities. Charapa has adjourned HCR to send a fact-finding mission to investigate these violations. तो नहीं हो, पर तुमने हमारी रक्षा की है. तुम डॉक्टर तो नहीं हो, पर तुमने हमारी जिंदगी बचाई है. तुम टीचर तो नहीं हो, पर तुम्हारे कारण हम स्कूल आ पाई हैं. तुम सिर्फ शौचालय नहीं, हम गरीबों के लिए इज्जत घर हो. इस शौचालय की बात करने में कभी झिझक होती, वो शौचालय आज देश की सोच का अहम हिस्सा हो गया. स्वच्छ भारत की आदत के साथ आओ बनाएं नया भारत. यूं तो सोचित है क्यों तम खोत तेज यानी स्पीड प्लस बेये प्रत 5G स्मार्टफोनस खतर छी बन्योमुत यानी टेक्नोलॉजी प्लस ते. ये क्या छो? एयरटेल 5G प्लस. अद काह 5G क्या है? जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा. अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा. हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही. अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है. घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1. अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट. Due to poor representation and little access to the courts of law, compounded with the state's suppressive policies, the people of Gilgit-Baltistan and POK have been denied justice for more than 7 decades. The local populace of illegally occupied territories has been deprived of adequate health, basic education and development. Restriction on freedom of expression, association and assembly. Journalists has been targeted for reporting of sensitive issues, and human rights activists have been harassed and intimidated. In addition, religious minorities including Christian, Hindus and Ahmadiyas face discrimination and persecution. They are concerned about the right of women and girls, particularly with regard to forced marriages and honor killings. The oppressed people of the illegally occupied territories continue to raise their voices against the injustices they are put through. Their anguish against Pakistan could anytime turn into a full-fledged rebellion. Moving on. It is said that sports help create a bond between contemporaries that lasts for a lifetime. Sports also give life to a genuine and sincere fulfillment that can go a long way in the holistic development of an individual and society as a whole. The Government of India is resolute in its efforts to achieve the goal of developing social life and promoting sportsmanship among the youth.
Recently, an interstate table tennis competition was organized for the development of sporting culture in the Union Territory of Jammu and Kashmir. Take a look. The Jammu and Kashmir government is keen to promote sports in the Union Territory. For the same, authorities keep on organizing numerous events and activities on a regular basis for engaging more youngsters in a variety of sports and games. In a recent step to promote the game of table tennis in the Union Territory, the 84th Senior National and Interstate Table Tennis Championship was organized recently at the Gymnasium Hall, University of Jammu. The abrogation of Article 370 has made it possible to organize events of such magnitude that not only encourage talented youngsters from remote parts, but also assimilate them into the nation-building process. जब पता लगा कि जम्मू में टूर्नामेंट हो रहा है तो काफ़ी खुशी थी इस चीज़ की, क्योंकि मैं पहले कभी जम्मू आया नहीं था, तो काफ़ी एक्साइटेड था और प्लस यहाँ पे प्लेइंग कंडीशंस भी काफ़ी अच्छी हैं, तो हमारा परफॉर्मेंस भी अच्छा आ रहा है, तो अब तक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं ऑलमोस्ट पूरा इंडिया घूम चुका हूँ, बट कश्मीर में जम्मू फर्स्ट टाइम आया हूँ और यहाँ पे आके एक्चुअली लग रहा है कि एक आप डिफरेंट जगह पे आए हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं। The 7-day-long event was organized by the Jammu and Kashmir Table Tennis Association along with the Sports Council of Jammu and Kashmir. The event saw the participation of about 900 players from 34 states, including international names like Sharat Kamal Achanta, Manika Batra and Satyana Ganashekharan, among many others. The players and officials were provided with appropriate facilities for food and accommodation to ensure their best performances and satisfaction. यहाँ पर करीबन 1000 पार्टिसिपेंट्स हैं, अराउंड 973, तो रफ फिगर मतलब राउंड कर रहा हूँ, 1000 पार्टिसिपेंट्स है। एंड मैं तो शुक्रगुजार हूँ जेके स्पोर्ट्स काउंसिल एंड जेके गवर्नमेंट की, बिकॉज अ टूर्नामेंट ऑफ दिस मैग्नीट्यूड दे आर ऑलमोस्ट स्पेंडिंग 1 करोड़। सो इसमें काफ़ी जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल एंड जे.एंड.के गवर्नमेंट इनको मदद मिल रही है। मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं पहले भी आया हूँ, 97 नेशनल्स खेला था मैंने, पार्टिसिपेंट था, और अभी आ रहा हूँ। देयर आर चेंजेस, बहुत अच्छे चेंजेस हुआ है शहर में भी, एंड आई थिंक द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी नाइस। एंड जैसे बोलते हैं ना, इट इज़ अ सिटी ऑफ टेम्पल्स, आई थिंक सो ट्रू। वाइब्रेशंस इधर इतना अच्छा है कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव कम हियर। अरेंजमेंट्स, सारे अरेंजमेंट्स अच्छे हैं, इधर अकोमोडेशन अच्छा है, द फूड इज़ गुड, प्लेइंग कंडीशन यू कैन सी देयर आर अराउंड 15 to 20 टेबल्स। मोस्ट ऑफ द पीपल, सभी लोग खुश है। ये अपना फैसिलिटीज से काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिली है इनको, और अब बहुत अच्छा हुआ है। विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड उन्होंने कंडक्ट किया है ये नेशनल्स, एंड इट कैन नॉट गेट बेटर देन दिस इज द हाईएस्ट टूर्नामेंट। जम्मू में आए हैं, ये हम लोग का 84th सीनियर नेशनल्स यहाँ पे हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे अरेंजमेंट तो बहुत बढ़िया है, सब रहने खाने का, और यहाँ पे बोर्ड्स टेबल सब अच्छे हैं, तो एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा है अभी तक। हाँ, है तो बिल्कुल सही बात है। हम लोग बहुत जगह खेलने जाते हैं इंडिया में, होल वाइड हम लोग ऑल इंडिया खेलते हैं, जगह जगह घूमते हैं, और यहाँ पे सब स्टेट्स के, सब जाति धर्म के लोग आते हैं। हम लोग को बहुत वो एक्सपेंशन मिलता है माइंड का, सबसे मिलकर। The Union Territory of Jammu and Kashmir is fast emerging as a favorite sports destination for players and enthusiasts across the country.
With a fast track on development in every field, sports have come to acquire a significant part of strenuous development efforts by the Indian government in the Jammu and Kashmir region. Authorities in Jammu and Kashmir have been taking several steps to empower women in the region and to make them self-reliant. In a recent initiative, a handicraft handloom training center was established in the Panchgrain block of Rajouri district, where around 20 women are being trained in shawl and carpet making. Take a look. The administration of Jammu and Kashmir keeps on taking a number of initiatives to empower the women folk of the territory and make them self-reliant. Taking a recent step in the same direction, a training center has been established in the Panchgrain block of the Rajouri area, where skill development training is being provided to women from far-flung hilly areas of the territory. At the center, free training and other facilities are being provided to a group of 20 women from Mankot area of Rajouri. अच्छे से सीख रही हैं ये अभी न्यू सेंटर है, तो जब सीख जाएंगी तो आगे ये है कि सिर्फ स्टेफन के लिए ना आए, आके कुछ सीखें ताकि ये अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं, कुछ बनाएं, आगे अपना रोजगार शुरू करें। जैसे गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी स्कीमें रखी हुई हैं, ये है कि ये एक हुनर है, इसको सीखना है, ये अपना एक कला है, इसको सीख के तो ये आगे बढ़ सकती हैं, आगे कोई काम चला सकती हैं, अपने घर को स्टैंड कर सकती हैं, किसी ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकती हैं। अब हस्बैंड है, उनसे कोई पैसे नहीं मांग सकती है, जब अपना पैसा होगा तो ये अपने हिसाब से खर्चेंगी। Women are being taught Shoshni embroidery at the center. These women weave beautiful designs on shawls, sheets and carpets and get paid for providing their finished products. On the completion of their training, these women will also get a diploma degree of 1 year and can take loans of up to 5 lakhs from the government to open their own ventures. Trainees are effusive in their praises of the government for introducing such a scheme which is helping them to become more self-reliant. सबसे पहले हमने बेडशीट निकाली, अब शाल निकाल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हमें। तो गुलशन मैम हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं और हमें शौक़ भी है सीखने का। हमें इसमें से डिप्लोमा मिलता है और हम अगर जॉब में अप्लाई कर सकते हैं तो आगे हम अपना कारोबार खुद भी खोल सकते हैं। यहाँ दूर दूर से लड़कियाँ आती हैं जो घर पे ऐसे ही बैठी थी, जिनको कोई काम नहीं था, कोई कुछ नहीं कर पाती थी, तो वो अब यहाँ पे सेंटर पे आती हैं, अच्छे से सीखती हैं और जो अपना कारोबार है आगे हमें डिप्लोमा मिलेगा, इसका पूरा डिप्लोमा मिलेगा। उसके बाद हम अपना जो बिजनेस है, कुछ भी कोई काम है अपने घर पे बैठ के जो कर सकती हैं, जो बाहर नहीं जा सकती वो अपने घर पे बैठ के भी कोई ना कोई काम जो कर सकती हैं। शॉल निकालती हैं, आगे किसी को देती हैं, घर पे भी हो सकता है ये काम। तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें, ये जो सीख रहे हैं हम कढ़ाई का जो सेंटर है, बहुत अच्छा लग रहा है। Many girls who are unemployed and hail from far-flung hilly areas have also joined this course in order to become more self-reliant. In a move to empower women from economically weaker sections, handicraft centers are encouraging women from far-flung hilly areas. As women are said to be the building blocks of the society, their empowerment at the grassroots level will not just create a positive impact, but also give a boost to the rural economy. चाहते थे कि यहाँ पे कोई ना कोई सेंटर आए जो घर पे बैठी हैं, ऐसे जिनको पैसों की तंगी होती है, वो कोई कारोबार करें, उनको थोड़ा अपना जो घर का खर्चा वो भी निकल जाए और कोई कारोबार सीखें, सिलाई, ये स्टेफन जो मिलता है हमें, तो सीखें, शॉल निकालें और 2 साल के बाद हमें डिप्लोमा मिलेगा। एग्ज़ाम भी होंगे, जो होगा उसके बाद हमें डिप्लोमा मिलेगा, ताकि हम जो थोड़े 10th 12th जो यहाँ पे पढ़ी हुई लड़की हैं वो आगे कुछ करें,
फॉर्म वगैरह लगाएं जॉब के लिए, उनका कोई कारोबार चले। It's initiatives like these that are not only helping women in Jammu and Kashmir to become more skilled, but is also instilling newfound confidence in them. And now in our special section of Incredible India, we'll take you to the Bhubaneswar city of Odisha, where the magnificent Rakuna Rath Yatra was organized and was thronged by scores of devotees. Dedicated to Lord Lingaraj, the chariot festival is celebrated every year in the month of Chaitra, which coincides with the Gregorian months of April and May. Take a look. Bhubaneswar city of Odisha has always been a town rich in culture, traditions and grand festivities. The city derives its name from the city's presiding god Lord Shiva, also known as Tribhuvaneshwara, which means God of the three worlds. The Lingaraj temple is one of the oldest temples in Bhubaneswar and serves as a venue for the magnificent Rakuna Rath Yatra. Celebrated in month of Chaitra on Shukla Ashtami, which coincides with the Gregorian month of April-May, the festival is celebrated with huge pomp and show every year, with thousands of devotees flocking the procession to offer their prayers to Lord Lingaraj. ये अशोका अष्टमी इसीलिए बोला जाता है, ये शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि में भगवान जो जाते हैं रामेश्वर मंदिर, वहाँ पे अशोक झर है जो अशोक के द्वारा बनाया गया था, सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था, उसी अशोक झर के तरफ जाते हैं अशोक अष्टमी तिथि में, इसीलिए इसको अशोका अष्टमी बोला जाता है। लेकिन इसका एक्चुअली जो नाम होता है रुकुणा रथ यात्रा, रुक्मिणी बा दुर्गा, उन्हीं के नाम से ये रुकुणा रथ यात्रा बोला जाता है। ये जो रथ होता है जिस दिशा में जाता है, इसका जो फेस होता है वो चेंज नहीं होता है, बस आगे वाले में जो घोड़ा जचा जाता है उसको पीछे वाले में फिट कर लेते हैं, लेकिन जो रथ को उसको टर्न अराउंड नहीं करते हैं, घुमाते नहीं है। रथ जिस दिशा में जाता है पीछे पीछे होके आता है, मतलब उसका पीछा आगे बन जाता है, आगे पीछा बन जाता है। A grand chariot made of wood was constructed for the festival. It was decorated in shades of red, yellow and orange using cloth and flower garlands and was detailed with intricate floral and tribal designs painted on it. Priests performed rituals and chanted prayers in praise of Lord Lingaraj, who is considered an incarnation of Lord Shiva, the Hindu god of destruction. The Rath festival lasts for a period of 5 to 7 days. Devotees draw the chariot from the Lingaraj temple to the Rameshwara temple, and the return journey starts from the 5th day. ये जो पवित्र अशोकाष्टमी का ये रुक्मणा रथ यात्रा है, ये लगभग 1100 ख्रीष्टाब्द से ये चली आ रही है और इसमें प्रभु लिंगराज जी का यह यात्रा है। हर जगह आप पुरी में देखते हैं, हर जगह पे देखते हैं प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है, लेकिन यहाँ विशेषता है कि यहाँ प्रभु लिंगराज यानी महादेव का रथ यात्रा होता है और यहाँ हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। मौसी माँ क्षेत्र मौसी के घर ये जाते हैं। आज ये जो समागम यहाँ देख रहे हैं आप, बहुत अच्छी रकम से ये यात्रा हुई और लोगों में अदम्य उत्साह है और हमारी जो हिंदू सनातन परंपरा है इसमें ये रुकुणा रथ को खींचना और इसको बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है और अनेक जन्मों का पुण्यों का प्रभाव होने से ही कोई व्यक्ति यहाँ सौभाग्य प्राप्त करता है। चैत्र मास का नवरात्र पर्व में अष्टमी तिथि में ये रथ मतलब फेस्टिवल होता है। यहाँ लाखों लोगों का भीड़ होता है और हमारा सौभाग्य है कि कोरोना के बाद से हम इस बार शामिल हो पाए हैं और बहुत ही पुण्य फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसका तो बहुत ही मान्यता है। यहाँ लिंगराज प्रभु, ये तो सारा मतलब विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और इनका बहुत ही महत्व है। सारे लिंगराज में ज्योतिर्लिंग है, लेकिन ये ज्योतिर्लिंग नहीं है, फिर भी ये महालिंगेश्वर है, तो इनका बहुत ज्यादा महत्व है। Rakuna Rath Yatra is also believed to be Papa Binashakari Yatra, meaning a festival that destroys or eradicates all evils and sins. According to the legend, in the Treta Yuga, Lord Rama visited Ekamra Kshetra, now known as Bhubaneswar, in Chaitra and stayed at the Rameshwara temple as a guest of Lord Lingaraj, who, along with his family, visited Lord Rama to wish him on his birthday, the Ram Navami.
From this significant visit, this festival originated. The festival finds its mentions in texts like Tirtha Chintamani of Vakaspati Mitra, Kalasara of Gadadhara, Kal Nirnaya of Raghunatha, etc. भुवनेश्वर का जो रथ यात्रा है, ये रथ यात्रा ये लिंगराज महाप्रभु का रथ यात्रा है। भुवनेश्वर बाहर के काफी भक्त लोग इकट्ठे होते हैं, जिसके कारण हर साल हम देखते हैं ये भीड़ होता है भक्तजनों का। और भी बड़ी अच्छी बात है, आज के दिन में हम लोग भुवनेश्वर में लोकल हॉलिडे भी डिक्लेयर किया जाता है। तो इसीलिए ये रथ यात्रा जो रामेश्वर मंदिर, जिसको मौसीमा मंदिर बोलते हैं, उधर तक खींच के जाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि ये रथ जो है आज खींचना शुरू होने के बाद बीच में रुक जाता है, फिर अगले दिन खींचा जाता है। ये जो रुकना रथ खींचने का जो परंपरा है, ये बहुत पुराना परंपरा है। ये संस्कृति के साथ उड़ीसा वासी सब लोग जुड़े हुए हैं और सबका बहुत विश्वास है लिंगराज महाप्रभु के ऊपर। पूरी रथ यात्रा जैसे होता है, यहाँ पर रुकना रथ यात्रा भी वैसे ही होता है। तो ऐसे देखा जाए तो उड़ीसा में पूरी का रथ यात्रा सर्वप्रथम है और सेकंड मान्यता मिलता है ये रुकना रथ यात्रा को। आज मैं यहाँ पर आई हूँ, लास्ट 23 साल से मैं भुवनेश्वर में रह रही हूँ और मैं आती हूँ, हर साल इस तरह भीड़ रहता है। अभी थोड़ा थोड़ा डेवलप हो गया है, थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन किया जा रहा है और बहुत लोग गांव से भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ आके बहुत दिनों से जिन लोगों से हम मिले भी नहीं होते हैं, यहाँ सबको मिलने को मिलता है और आज मैं बहुत खुश हूँ। Bhubaneswar, also known as the city of temples, celebrates many more such festivals to cherish the culture and ancient heritage of the region. That's all we have for you in this week's episode. Goodbye and take care.